सो गाइज आज हमारे 25-26 UCL कैंपेन का स्टार्ट होने वाला है फॉर बार्सिलोना एंड हमारा फर्स्ट मैच ही सेंट जेम्स पार्क पे न्यूकैसल के अगेंस्ट है. वेरी डिफ़िकल्ट मैच, probably more difficult than PSG game. And St. James's Park का हमें एटमॉस्फेयर पता ही है, इट्स एब्सोल्युटली एक्सट्रीम. वी हैव सीन PSG प्ले देयर 2 साल पहले UCL में एंड दे गॉट एब्सोल्युटली थ्रैश्ड. एक लुइस एनरिके की वेल डिजाइंड PSG गॉट थ्रैश्ड बाय न्यूकासल जस्ट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द वे दे प्ले एट देयर होम. वी हैव सीन लिवरपूल प्ले दिस सीजन एंड वहाँ पे भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स लिवरपूल को झेलनी पड़ी बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर इवन व्हेन न्यूकासल वाज अ मैन डाउन. एंड टेकन इन अकाउंट बार्सिलोना के अवे फिक्चर्स ओवर द ईयर्स, ओवर 10 years वी हैव सीन बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग रहे हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट प्लेइंग इन इंग्लैंड, प्लेइंग इन अवे मैचेस इन इंग्लैंड, वहाँ का एटमॉस्फेयर एक डिफरेंट ड्राइव देता है टू देयर प्लेयर्स. एंड बार्सिलोना ने हमेशा से स्ट्रगल किया है प्लेइंग इन इंग्लैंड. वी हैव सीन लिवरपूल अवे, दैट वाज द लास्ट टाइम वी प्लेड अगेंस्ट अ इंग्लिश टीम एंड लाइक वी ऑल नो हाउ दैट एंडेड. सो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट मैच होने वाला है फॉर अस एंड मेरे को हाई होप्स है टू दिस टीम बट आई एम स्केयर्ड ऑब्वियसली एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी वेल ड्रिवन गेम. हमें बहुत काम करना पड़ेगा, हमें भागना पड़ेगा. वी हैव टू बी वेरी सॉलिड इन डिफेंस. हमारे को पता है कि हमारी क्या क्या मिस्टेक्स हम कर सकते हैं इन डिफेंस. जॉन गार्सिया वुड प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टुडे. एंड टॉकिंग अबाउट द इंजरीज दैट बार्सिलोना हैव राइट नाउ, लमीन यमाल एंड बाल्डे हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो गए इस गेम के लिए. लमीन यमाल यहाँ पे बहुत ही फोकल पॉइंट है हमारी टीम का, टेकिंग ऑन प्लेयर्स, दैट क्रिएटिव आउटलेट दैट ही गिव्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. बट वी विल बी मिसिंग हिम इन दिस गेम एंड ये हमारे लिए काफ़ी बैड पॉइंट है क्योंकि ऑन दैट राइट साइड जहाँ पे लिवरामेंटो खेलते हैं ऑन द लेफ्ट बैक पोजीशन ऑफ न्यूकासल, वहाँ से टेक ऑन लेना लमीन के लिए बहुत इजी होता है. वहाँ पे वो एक डिस्ट्रप्शन प्रोवाइड करते हैं. कंसिडरिंग कि लमीन को कभी कभार रोकने के लिए टीम्स को 2 या 3 प्लेयर्स को उस पर लगाना पड़ता है, दैट वुड क्रिएट मोर स्पेस फॉर अस डाउन द मिडल जहाँ पे हमारे मिडफील्डर्स पेड्री एंड डियोंग काम करते हैं. एंड ये चीज़ के वजह से the player that would be playing on that side would be Rafinha, and I wouldn't demand him to take on Livramento as much as Lamine does, but I would still want him to run with the ball, create some disruptions, come in, come out with Koundé, combine with Koundé, so that हमारे midfielders को and हमारे attacking midfielders को like वो एक space मिले for attack and to disrupt the midfield of Newcastle. इसके अलावा जिरार्ड माल्डिनी हमारे लिए खेलेंगे लेफ्ट बैक पोजीशन पे. आई नो कि बहुत लोगों को डाउट्स होते हैं अबाउट हिम एंड मेरे को खुद भी लाइक आई एम नॉट वेल सेटिस्फाइड विद हिम, बट ही हैज़ परफॉर्म्ड फॉर अस. हमारी पिछले साल की इंटर वाली गेम में भी येस ही इज़ नॉट दैट गुड डिफेंसिवली, उसके पास वो पेस नहीं है जो बाल्डे हमें प्रोवाइड करता है. ही डज़ नॉट हैव दैट एक्सप्लोजिवनेस, बट इन अ लॉट ऑफ सेंस वो बहुत चीज़ों में हमें अलग तरीके से भी प्रोवाइड करता है. कंसिडरिंग हिज क्रॉसेस, हिज बॉल प्लेइंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को एंड आई फील लाइक जेरार्ड मार्टिन का एक अच्छा गेम होगा. ही हैज़ लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिज मिस्टेक्स. वी हैव सीन अब वो ही हैज़ ग्रोन एज अ प्लेयर एंड आई वुड फील गुड फॉर हिम टू हैव अ गुड गेम. अगर वहाँ उस साइड पे हमारे को ऑब्वियस सी बात है कुबार्सी एंड जेरार्ड मार्टिन वुड प्ले ऑन द लेफ्ट साइड एंड न्यूकासल हो सकता है उस साइड को ज़्यादा टारगेट करे बिकॉज वी ऑफ्टन सी कि बाल्डे वाली साइड को ज़्यादा टारगेट किया जाता है क्योंकि बाल्डे इज़ नॉट दैट गुड डिफेंसिवली एंड जेरार्ड मार्टिन एज वेल. बट हमें उसको कैसे डील करना है इज़ आवर हाई लाइन. ऑब्वियसली वी हैव टू कीप अ क्लोज आई ऑन देयर थर्ड मैन रन्स. On second balls we have to win those and काफ़ी ही फिजिकल गेम होने वाला है ये. सो वी हैव टू बी ऑन आवर टोज ऑल द टाइम. बट आई बिलीव इन फ्लिक, उसने हमारी टीम को वो फिजिकलिटी प्रोवाइड की है इन द पास्ट ईयर कि वी कैन गो इन टू दिस गेम लाइक विद फुल कॉन्फिडेंस कि हमारे प्लेयर्स वुड गिव आर 100%, 110% इन दिस गेम. टॉकिंग अबाउट सेंट जेम्स पार्क, the atmosphere, it's very vital, it's
dangerous in my opinion, but I am not considering this as a very big thing because we have played in very difficult stadiums as well. पिछले साल we played in Dortmund, we played at Santiago Bernabeu, we played at Metropolitano, we played at San Siro, and we saw कि हमारी टीम वहाँ पे जाके परफॉर्म कर सकती है. This is not the old kind of Barca जो away matches में जाए and they crumble down just because की atmosphere वहाँ का बहुत अच्छा है. So I feel like I have the confidence कि हमारी टीम वो कर सकती है. Yes, उनका atmosphere बहुत प्रॉब्लम देगा, उनकी टीम बहुत प्रॉब्लम देगी, बट आई स्टिल बिलीव कि हम जीत सकते हैं. टॉकिंग अबाउट हाउ न्यूकासल कैन प्ले, वी ऑल नो वोल्टेमाडे, डैन बर्न, दे हैव द हाइट एडवांटेज. द शॉर्टेस्ट प्लेयर इन देयर टीम इज लाइक 6'1" एंड लाइक सारे लंबे लंबे प्लेयर्स है एंड दे कैन हैव दैट हाइट एडवांटेज ओवर आवर डिफेंस. कुबारसी is not that tall, Gerard Martin is not that tall, Koundé is not that tall. The only thing that I feel, the only defender, and I want to trust him in this game is Araujo. I feel like वो physicality और वो जो aerial duels win करने की बात आती है उसके अंदर he can help us a lot, and I feel like उसका खेलना भी बहुत vital चीज़ होगा. Newcastle obviously हमारी height को target करेगी. We have seen them do this with multiple teams over the years. Height advantage पे हमें beat हो गए हम, but we have to take on that second balls जो हमें ground duels जीतने पड़ेंगे with them. We have to press them as hard as we can कि वो उनके style of play से हम खेलने के लिए बिल्कुल nullify कर दें. And उनकी midfield, talking about Joelinton, Bruno Guimaraes and Tonali, बहुत ही वर्कहॉलिक, बहुत ही physical midfield रहती है उनकी. They'll push into tackles, they'll be in hard, and they'll be absolutely rigid with Pedri, De Jong, Fermin playing in that midfield. And but the one thing that we have over them is the technicality. Pedri, De Jong, nobody in the world can beat them in technicality. They are the most technical midfielders in the world, and यहाँ पर ही we can overthrow their midfield. वहाँ पे De Jong would be very very vital for us in this game. If he's fit, I want him to play because वो जो drive with the ball वो provide करता है, that would disrupt their midfield, their position play in their midfield, even in their defense, जो बहुत important है. Pedri can do that. Pedri can orchestrate that play with De Jong, but he can't do those. He can't make those driving runs into the midfield like De Jong does, because वो like that is what De Jong is known for. So मैं इन सब चीज़ों पे बैंक करूँगा for Barcelona to do against Newcastle, and I know Newcastle ये चीज़ों पे ही हमारे against खेलना चाहेंगे, and they'll play to their strengths because it's their home. So but we have to see कि हमारी midfield, हमारे हांसी फ्लिक किस तरीके का tactical setup provide करेगा आज की गेम के लिए. Talking about the team starting 11, firstly हम न्यूकासल की बात कर लेते हैं. Voltemade is gonna start in their 9th position. I feel like the wings would be with Barnes and Murphy on the right, Barnes on the left. Elanga could play considering he's more faster than Murphy, and Gerard Martin वाली side पे he'll be playing. There is a chance that Elanga को start मिल सकता है, but still Murphy would play 45 minutes. The next half Elanga would come. So दोनों side से ही हमें dangerous wingers मिलते हैं. So our fullbacks have to be on their toes all the time. Midfield, we have talked about it. Joelinton, Bruno Guimaraes, Tonali, they are the three midfielders that are gonna play. Defense के अंदर Dan Burn and Schär would be the two starting centre backs. Livramento and Trippier would be the two fullbacks. Livramento on the left and Trippier on the right. Nick Pope, very important player for them. Good keeper in my opinion. That he'll be in the goalkeeper position for Newcastle. Talking about the most important thing, our Barcelona lineup, considering हमारे पास Balde and Lamine Yamal are not starting in this game. They have not traveled to England for this game. I feel like इस गेम के अंदर, considering their defense is physical, their defense is
tall. I feel like Leva could get a start in this game. I feel like Ferran ko khilana would be the wrong call because Ferran is more like a mobile striker. He is not that good in holding up the play, and Leva वो चीज़ बहुत ज़्यादा कर सकता है. So playing Leva would free up space for Rashford and Rafinha on those wings, क्योंकि between the line run करना would be more important in this game I feel. And Lewandowski एक player को at least occupy कर सकता है, considering he has that physicality in him. On the wings I feel Rashford and Rafinha would start. Not Ferran against Rashford, because Rashford can take on those 1v1s. That would be very important in this game. And I feel like Rashford may score against Newcastle. I have that gut feeling in me. Rashford का ये बहुत अच्छा गेम हो सकता है I feel, considering he has experience to play against Newcastle. That would be very vital for us. I feel like Olmo की जगह Fermin start करेगा, considering he has performed for us in the past few games. Like pretty well. We saw him against Valencia. He was damn good. So I feel like वो pressing intensity जो Fermin provide करता है instead of Olmo could be very vital, and I feel Fermin should start this game. Pedri and De Jong would be our midfielders. If De Jong is not fit to start this game, Casado would be my second option. Casado भी वो physicality provide करेगा, and that could be vital for us. Gerard Maldini would start in left back. Koundé would start in right back, and with the centre back pairing I would go with Kubarsi and Araujo. Yes, कुछ लोग कहेंगे Araujo को मत खिलाओ, play Christensen, ball playing defender, play Eric Garcia, but इस गेम में the ball playing जो पार्ट है वो हम कुबारसी के ऊपर भी छोड़ सकते हैं, बट जो वो हाइट एडवांटेज है, जो वो फिजिकलिटी है, वी नीड दिस फिजिकलिटी इन आर डिफेंस इन दिस गेम, एंड वो पेस जो अराहो प्रोवाइड करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. And I feel Araujo should start this game. I don't trust him fully because he is known to make mistakes in big games, but I feel like he's gonna do well, and he would be vital for us in our defense. Joan Garcia would start the game. He should be very important for us because I feel like हम बहुत ज़्यादा shots concede करेंगे in this game, considering कि Newcastle का attack बहुत fast है, and they could hurt us behind our defense, high line के पीछे. And John Garcia should be on his toes all the time, coming in, playing that sweeper keeper role. तो ये मेरा lineups का रहेगा for both the teams, and I feel like Barcelona can do this. I hope they do. मैं obviously डरा हुआ हूँ. It's a important game early on the season, and यहाँ से हमारा momentum बनेगा for the upcoming games, considering कि हमें second match day पे ही PSG खेलना है. If we go out and play against Newcastle like we do, if we beat them, this would be very vital for us in our confidence. This would be very vital for the haters to know that हम अभी भी same capacity पे ही खेलते हैं. It's not like, yeah, our defense has those problems, but उन defensive problems की जगह we attack more, and that is what Hansi Flick's system is all about. So I feel like I have that confidence in my team that we'll go and show them what Barcelona can do, and I feel like we can win. मेरी prediction would be एक 4-2 Barcelona win. I feel like Newcastle would score 2 goals, but I feel like we could hurt them really bad on their defense. I feel like Rafinha and Rashford would be the main players for this game, and yeah, let's hope we win. And I'll see you in the next video then.